हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. देयर आर many methods of finding the solution of linear equations by matrix method. Like first method is by adjoint method, or you can say inverse method. Another advanced methods are A inverse by Cayley-Hamilton theorem, A inverse by elementary row transformation. Right. So before going to start the lecture, please subscribe the YouTube channel Maths Building Counseling Center if you have not subscribed it, right? So that you will get the regular updates time to time. So this is, I have said, what is this? This is a system of two variables, two equations, 2 by 2, right? Another system of equations, three variables and three equations, 3 by 3. Is that clear? So these are the, how to find the solution of these linear equations, okay, by matrix method. Okay, that we are going to learn in this lecture. Okay, so can we start here? So let us see solution of linear equations by adjoint method. Is that clear? Consider the system of linear equations. Okay, so system of linear equation, this a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. Is that clear? So this system of equation can be written in matrix form like this: a1, b1, a2, b2. Is that clear? Matrix, and this is x, y. Is that clear? And on right hand side is a c1, c2. Is that clear? So we can say that it is, this is a given as matrix A, this is x, and this is equal to what? Ax is equal to b. This is now equation 1. Is that clear? Similarly, so this was a system of two equations, two unknowns. Similarly, the system of three equations, three unknown can be written here. Look at here. तो डिटर्मिनेंट क्या होगा कोएफिशिएंट का? a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. First row, first equation coefficient. Second row, second equation coefficient. Third row, third equation coefficient. And the next matrix is a matrix of unknown, that is column matrix x, y, z. And this is equal to right hand side is the matrix of right hand side value d1, d2, d3. Is that clear? So we can write this is also can be written as ax is equal to b. This is also we can represent by equation 1. Is that clear? Where what is a? Where a is what? Where a is a matrix of coefficients. X is what? X is a matrix of variables, unknowns. And B is what? The matrix of constants, right hand side. Right hand side. Is that clear? So we have, that is, any system 2 by 2 or 3 by 3 can be written in this form. Okay. Now multiply, pre-multiply both sides. Okay. So in previous lecture we have studied that if A is a matrix, if it is non-singular, then we can find its A inverse. So multiply both sides of equation 1 by A inverse. Is that clear? So what you will get? Left hand side. So you will get A inverse into Ax is equal to A inverse into B. But you know that by definition of inverse matrix, A inverse into A is what? I. So ये Ix हो जाएगा.
identity matrix into X will be equal to X. Okay, so from this you will get X is equal to A inverse B. So that is X is equal to A inverse B, and this is the result we required to find the solution of the given system of equations. Is that clear? So ये हो गया method. Okay, मतलब क्या करना है? You will be given a system of linear equation. Write down system of linear equation in matrix form. Matrix form. This is matrix form. Matrix form. Okay. Then multiply both side. Pre-multiply both side by A inverse. So you will get last equation X is equal to A inverse B. Is that clear? So then from as you know that A is a matrix of coefficients, so we find determinant of A. Find determinant of A. Okay, and that should not be equal to 0, means non-singular. And if it is non-singular, then only A inverse exists. Okay, so then find matrix of cofactors. To find cofactor of and each element of A. Okay, and then matrix of cofactor of A, and that is equal to C. Is that clear? And if we find the transpose of this matrix of cofactor, it will be called adjoint of A. Okay, so then adjoint A is equal to C transpose. ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही है. ओके, सो यू विल गेट find A inverse by adjoint method. What is the formula? Adjoint of A divided by determinant of A. So understand? So can we move for the example now? Okay. So let us see first example. Find a solution of a system of linear equation by adjoint method. तो एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है. Okay. So let us see the solution. Is that clear? So now we write the given system in matrix form. Ax is equal to b, that is equation 1. तो कैसे लिखेंगे हम? So you will get ax 1 minus 1. पहला रो coefficients of x and y. दूसरा रो coefficients of x and y 2 1. Unknowns क्या है? x y. And right hand side values क्या है? 4 2. बराबर है? And this implies that ax is equal to b. ये. Okay. So where a क्या है? A is equal to 1 minus 1 2 1. X क्या है? x y. Okay. And b क्या है? B is a 4 2, right hand side value. Is that clear? Is it okay? Okay. Now by equation 2, पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि if we multiply this equation by A inverse both sides, then we will get what? X is equal to A inverse into B, and this is now equation number 2. Multiply both sides of equation 1 by A inverse, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा 2. तो वी नीड टू फाइंड A इनवर्स नाउ. अब A इनवर्स निकालना, तो नाउ टू फाइंड A इनवर्स. ओके, तो क्या क्या निकालना है आपको? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A. इज दैट क्लियर? सो लेट अस सी. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 minus 1 2 1. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो 1 plus 2 and that is equal to 3. So therefore determinant of A is equal to
3. Now adjoint of A is equal to, अब ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इज दैट क्लियर. सो व्हाट विल गेट, डायगोनल एलिमेंट है 1 1, तो इंटरचेंज के बाद भी वही रहेंगे, और साइन चेंज करना है तो +2 का -2 हो जाएगा और -1 का +1 हो जाएगा. सो ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ए. इज दैट क्लियर. एंड therefore A inverse is equal to adjoint A divided by determinant A. डिटर्मिनेंट है 1/3. एडजॉइंट ए कितना निकाला है हमने, देखो कितना है, 1 1 -2 1 1 1 -2 1. इज दैट क्लियर. तो ये इनवर्स हो गया. नाउ बाय इक्वेशन 2, व्हाट इज इक्वेशन 2, x is equal to a inverse into b. तो व्हाट इज x था x y कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट इज a इनवर्स, 1/3 इंटू 1 1 -2 1. और b क्या है, व्हाट इज b इज 4 2. अब ये मैट्रिक्स है 2/2 और ये मैट्रिक्स है 2/1, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 2/1. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, यू विल गेट R1 C1 R2 C1, कॉलम एक ही रहेगा. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू R1 C1 क्या आएगा, R1 C1 तो 1 इंटू 4 1 इंटू 2 कितना आएगा, 1 इंटू 4 4 1 इंटू 2 2, तो कितना आएगा 4 + 2. और ये कितना आएगा, -2 इंटू 4 और 1 इंटू 2, दैट इज -8 + 2. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1/3, इट इज 6 और ये आएगा -6. 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इट विल बी 2 -2. ओके, सो व्हाट वी have x y is equal to 2 - 2. इज दैट क्लियर. ये भी मैट्रिक्स 2/1 की ऑर्डर की है, ये भी मैट्रिक्स 2/1 की ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे. सो thus x की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग 2, एंड y की वैल्यू क्या है, -2, एंड दैट इज आंसर. इज दैट क्लियर. सो 2/2 सिस्टम अगर रहेगी तो आंसर विल बी डिटरमाइंड इजीली. नाउ सेकंड, दिस एग्जाम्पल. Okay, so what you will get, find a solution of a system of linear equations by adjoint method. So पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, और तीसरा इक्वेशन ये. 3 unknown, 3 equations. Is that clear? So we write the system in matrix form. So solution. Is that clear? तो system in matrix form what you will get, पहले लिखेंगे हम ए पहला रो 1 -1 1, सेकंड रो 2 1 -3, थर्ड रो 1 1 1. बराबर है. दे हियर इज x y z इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 4 0 2 राइट हैंड साइड वैल्यू. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज दैट a into x is equal to b, that is equation 1 लिखा है यहाँ पे. ये हो गया इक्वेशन 1. इज दैट क्लियर. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, सॉरी प्री मल्टीप्लाई. सो यू विल गेट a इनवर्स into ax is equal to a inverse into b. a inverse into a, that this implies that I into x is equal to a inverse b, and that is x is equal to a inverse b, and this is equation number 2. Is that clear? So equation 2 हो गए. तो to find a inverse, you find determinant of a. बराबर है. और दूसरा निकालना है find
एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 1 1 1। इज दैट क्लियर? सो इट इज इक्वल टू, निकालो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, then minus of minus 1 that is plus 1 multiplied by 2 plus 3, 2 plus 3, और last element है 1 multiplied by 2 minus 1, 2 minus 1, so it is equal to 4, 1 plus 3 4, 4 into 1 4, 2 plus 3 5, 5 into 1 5 plus 1, and that is equal to 10. So therefore determinant of A is equal to 10. एक आंसर ये मिल गया हमको 1. Okay, now to find cofactors of each element. Okay, so let us move. हाँ, देखते हैं. हाँ, तो we have to find cofactor of each element. Is that clear? तो पहला रो वन, तो कोफैक्टर ऑफ पहला एलिमेंट कौन सा होगा 1 इक्वल टू, दूसरा है कोफैक्टर ऑफ, दूसरा एलिमेंट कौन सा है 1 माइनस 1 1 है ना पहला रो, तो कोफैक्टर ऑफ माइनस 1, देन कोफैक्टर ऑफ 1, ये 3 हो गए. तो अब यहाँ पे देखो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे आएगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3, इंटू यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आएगा, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आएगा. तो देखते हैं हम इसमें क्या आएगा. कोफैक्टर ऑफ 1, तो दैट इज 1 माइनस 3 1 1, 1 माइनस 3 1 1, और कोफैक्टर ऑफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 माइनस 3 1 1, 2 माइनस 3 1 1, देन लास्ट 1 का कोफैक्टर क्या होगा 2 1 1 1, 2 1 1 1, तो इट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 4. ये कितना होगा, माइनस 1 का पावर 3 है, इट इज माइनस 1, इंटू कितना आएगा 2 प्लस 3, दैट इज 5, सो माइनस 5, देन इट इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर 4 प्लस 1, और इधर आएगा 2 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? सो ये आ गया एक. देन रो 2, कोफैक्टर ऑफ रो 2 का पहला एलिमेंट कौन सा है 2, देन कोफैक्टर ऑफ दूसरा एलिमेंट कौन सा है 1, और देन कोफैक्टर ऑफ तीसरा एलिमेंट है वो 2 1 माइनस 3, बराबर है. ये आएगा माइनस 1 टू द पावर 2 1 है पहली पोजीशन, तो 2 प्लस 1, ये आएगा माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2, और ये आएगा माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट. इज दैट क्लियर? अब पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसा 2 लिया तो उसका कोफैक्टर हो जाएगा माइनस 1 1 1 1 1, और 2 1 का कोफैक्टर क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1. इज दैट क्लियर? और उसके बाद में माइनस 3 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस 3 का 1 माइनस 1 1 1. ओके, सो लेट अस सी, इट इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 दैट इज माइनस, और ये आएगा माइनस 1 दैट इज द माइनस 2 ऑफ माइनस दैट इज प्लस 2.
इज दैट क्लियर? उसके बाद में ये कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा -1 का इवन पावर, तो ये होगा 1 - 1 दैट इज 0। और ये कितना होगा माइनस, क्योंकि -1 टू द पावर 5 है माइनस, और ये हो जाएगा 1 + 1, सो इट इज -2। सो 2 0 -2 हो गया। अब हम निकालेंगे रो 3। तो कोफैक्टर थर्ड रो का पहला एलिमेंट कौन सा है, 1। थर्ड रो में ऑल एलिमेंट्स आर 1, कोफैक्टर ऑफ 1 एंड कोफैक्टर ऑफ 1। तो ये आएगा -1 टू द पावर 3 + 1, -1 टू द पावर 3 + 2, -1 टू द पावर 3 + 3। यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आएगा एक डिटर्मिनेंट, बराबर है। सो -1 टू द पावर 3 + 1, तो इट इज -1 1 1 -3। इज दैट क्लियर? और दूसरा आएगा 1 1 2 -3, देन 1 -1 2 1, 1 -1 2 1। तो इट इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो, -1 टू द पावर 4 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद में ये -1 टू द पावर 5, तो ये -1 आएगा इंटू -3 -2 एंड -5, -5 इंटू -1, सो इट इज +5। Is that clear? -1 to the power 6 and a plus. So it is what? 1 plus 2, that is equal to 3. Is that clear? तो ये मिल गया हमको। So therefore C is a matrix of cofactors. तो what is C? पहला रो क्या होगा, 4 -5 1, बराबर है। देन 2 0 -2, 2 0 -2, then -2 2 5 3, 2 5 3। What is C? It is a matrix of cofactors. So understand, C से हम क्या निकालेंगे अब, C ट्रांसपोज, that will be adjoint. Okay, so therefore adjoint A is equal to क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज लेंगे अब, तो C का ट्रांसपोज, पहला रो था, पहला कॉलम था 4 2 2, वो रो हो जाएगा 4 2 2। दूसरा कॉलम -5 0 5, -5 0 5, और तीसरा होगा 1 -2 3, 1 -2 3। सो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड नाउ A inverse is equal to adjoint A divided by determinant A. Okay, and therefore A inverse is equal to, what is the value of determinant of A? It was how much, 10 हमने निकाला ये, तो it is 1/10 into adjoint A कितना है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये इनवर्स हो गया, and therefore by equation 2 we have x is equal to A inverse B. So A inverse है 1/10 into 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। A inverse हो गया, and what was B? B was the right hand side value, and it was what, 402,
2 राइट हैंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो ओके सो नाउ वी सॉल्व देयरफॉर x इज इक्वल टू अब इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1 तो फाइनल ऑर्डर रहेगा 3/1 एंड दैट विल बी इक्वल टू r1c1 r2c1 r3c1 इज दैट क्लियर तो ये 3/1 ऑर्डर हो गया हमारा सो नाउ 1/10 इंटू अब r1c1 क्या होगा देखो 4 इंटू 4 16 0 प्लस 4 यानी कितना आएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 बाद में ये आएगा -20 प्लस 0 प्लस 10 -20 प्लस 0 प्लस 10 और तीसरा आएगा 4 -0 प्लस 6 4 -0 प्लस 6 so it is equal to 1/10 into 20 -20 plus 10 that is -10 4 plus 6 is 10 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट को तो व्हाट इज द आंसर सो इट इज इक्वल टू कितना आएगा 20/10 2 -10/10 -1 और 10/10 1 is that clear and what is x the matrix of unknown x y z okay so from equality दोनों मैट्रिक्स जो है वो 3/1 ऑर्डर की है तो दोनों इक्वलिटी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 and z is equal to 1 is the answer so x is equal to 2 y is equal to -1 z is equal to 1 is the required solution so did you understand this so if you understand the lecture very well please subscribe the YouTube channel Maths Clinic Counseling Center like the video and share it to the students those who are in need thank you very much